start with our class today. Aditya, you can go ahead and start. We will start, Ada. Okay, so today, like the last time, which was 2 weeks ago, today we'll be practicing our reading and speaking. And we're going to be looking at simple sentences. So a simple sentence is just a small or short statement that is saying what a person is doing or what you are doing or what you like. So let's get started. Afsha, can you try to read this first sentence? What's this word? This word that I'm Yeah, that's almost, but what's this word, Afsha? Do you see the word in red, Afsha? What is this word? Yeah. So, can you try once more, but this time you include the? Try reading this full sentence one more time. I am going to the Yeah. Yeah, that's right. Thank you, Afsha. I am going to the park. So, can we have everybody just practice saying this sentence, maybe with your mics or your microphone muted? Just practice saying this sentence. I am going to the park. Okay. So, class, in this sentence, I am going to the park. Which word is the verb? B-E-R-B. Which word is the verb? Try करो. हम लोगों ने verb पढ़ा है पहले. हमने काफी classes में verb पढ़ा है. Verb होता है action word. तो कोई बता सकता है मुझे इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? वंश आप ट्राई करो, अफरोज, अफशा, कोई भी ट्राई करो. हेमंत, ट्राई. प्रथम या मित्तल या तारीख. Yes, unmute करके बताइए. आफशा, अफरोज, मित्र. कोई भी वर्ब क्या चीज होती है? वर्ब इज अ वर्ड जो आप कोई एक्शन करते हो. जैसे अब मैं टॉकिंग इज अ वर्ब. ठीक है. आई एम लिफ्टिंग इज अ वर्ब. आई एम ईटिंग इज अ वर्ब. तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? आई एम गोइंग टू द पार्क. सोचो, एक्शन वर्ड कौन सा है इसमें? पार्क तो एक्शन नहीं है आफशा. पार्क तो एक जगह हुई ना. इट्स अ प्लेस. पार्क इज अ प्लेस. पार्क इज नॉट एक्शन. आपको काम करना चाहिए. Going is where you go. Yes. Yes. Going is the verb. अच्छा ठीक है. And also somebody try इस अब हम लोग रिवीजन भी करेंगे, रीडिंग भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे. हमने ये सब पढ़ा हुआ है पहले. We have learned verbs, we have learned nouns. अब इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है? Somebody try. मित्तल, once you try, anybody try. Afros, noun कौन सा? Noun, N-U-O-N, N-O-U-N, noun. Noun क्या चीज होती है? Noun. Noun is what? Place, name, place, animal, thing.
Noun is the part. Very good. Part. Because noun is a place or thing or person or animal, that is noun. Okay, Aditya, let's go ahead with the next sentence. Okay, so just to review, the verb in this sentence is going because going is an action word, and the noun in this sentence is park because a noun is a person, place, or thing, and park is a place, so it has to be a noun. So let's go to the next sentence here. So, let's see. They have many fish, happy, others eat. Yeah. So everybody practice with their microphones muted this sentence number 2. Just practice saying this sentence. Mittal, you try to say this sentence. आप try करो. Now, Hmm. apple, Apple, there, Hmm. tree. Yes. And yeah. Vansh, you try. Vansh, आप read करो. Vansh. or Hmm. are Hmm. many Hmm. apple Hmm. or the Hmm. tree. Okay. So Aditya, you can go ahead and ask the appropriate words. There are nouns in this sentence, and so let's see if somebody can identify. Yeah, I think Mithil said the nouns. Mithil, can you repeat which words here are the nouns? Here, let me remind you. A noun is a person, place, or thing. अनम्यूट करिए मित्तल और आप बताइए कि इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है. Yeah, Now, apple, yeah, apples, tree. What was the first word you said? yes. Which there? Share, a sign, are, means. Yeah, so the nouns here are apples, because that's a thing, and tree. Tree can be a place or thing, but in this sentence, it's just a thing. Like if we said there are many apples on the tree in the park, then the tree is a place, but in this sentence, it's just a thing. So that's right. And let's move on to the next sentence. So, let's see. Tariq, you want to try? Tariq Ansari, आप try करो. मैम पूछा मैम. Yes. Takir and Pratham is observe our class. They are not a student. They only observe our class. Okay. Okay. Thank मैम you. हम भी. Tariq Book. and who else? Pratham. And Harsha also, ma'am. And Harsha Harsha. also Okay. observe. Tariq, Pratham and Harsha are observing. Okay. Yes. So then in that case, Afroz, you try. Today you try, Afroz. Yeah, Put on the but the book book on and the table. the treasure On the and the table. table. Good boy, Mathur. Yeah. So put the books on the table, and there should be a period right here. There. Yeah. So I want everybody to, with their mics muted, just practice saying this third sentence, number 3, that Afroz just read.
So I'll give you a few seconds. Okay, so Afsha, or are you frozen? Let's see. Okay, how about yeah, yeah. So yeah. So Vansh, yeah. So Vansh, can you try saying this sentence too? Number 3. ट्राई करो वंश ये सेंटेंस बोलना धीरे धीरे ट्राई करो पर ट्राई करो अनम्यूट करके करिए बेटा वंश अनम्यूट करो और बोलो ये नन UUSD मैम कह रही है बोल क्या बदतमीज किया ट्राई करो वंश स्क्रीन को देखो सेंटेंस को देखो और ट्राई करो रीड करना धीरे धीरे स्लोली टेक योर टाइम पर करो ट्राई करो ये पहला वर्ड क्या है PUT इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट इज इट PUT PUT Aditya, circle. You might want to circle that word so that one can see it. Okay. Noun. Huh? Mithal, you try. Book. Huh? And Yeah. tables. Yeah. Yeah, Yes. that's right. The nouns in Correct. the sentence are books and table, right? Because these are both things. And what is the Mithal. word? Huh? Sorry. Go ahead, Aditya. Go ahead. Oh, I was going to ask the same thing. Do you know the verb in this sentence? Remember, verb is an action word. Mithal, do you see the verb? So this might be a little challenging because it's a bit more hidden, but oh, Afroz, did you raise your hand? Afroz, do you know the verb in this sentence? Afroz, इस सेंटेंस में आप जानते हैं? हाँ देखो ट्राई करो वर्ड कौन सा वर्ड मतलब एक्शन वर्ड जब कोई काम कर रहे हो कोई चीज करते हो हाँ हाँ woman मैम अक्षय नहीं पता अक्षय यू ट्राई अक्षय इसमें वर्ड देखो यान ओ यान ये की ये हमारे यार तो मैम Okay, Aditya, you can tell because this is part. Okay, so the verb is a bit hidden, but the verb in this sentence is actually put. Here, let me circle. Yeah, put. So what does it mean to put or put something? It means to take something, for example, this water bottle, this bottle right here, and I put it down on this table. So put is like grabbing something and then putting it somewhere in some other place. It can be anywhere, right? But in this case, we are grabbing the books and putting them on the table. So putting is an action, and we know that actions are verbs. Like I have this watch, okay, and I have this. I am putting this coin on the watch. Put it over here, okay? That is a verb. Okay, let's move to the next sentence, Aditya. Okay.
Same. So Afsha, can you read this first sentence? This first one. Sir. On the Sir. Of course, sir. Yeah. खिड़की पर खड़ी है Yeah, that's right. Afroz, can you try saying this sentence too? Sir. G to G S U R C G R A S A R O N. Yeah. Yeah, man, sir. अफरोज Afro जी मैम. रीड करो, रीड करो। ये पहला वर्ड क्या है? ये THE, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आदित्य, यू कैन कीप सर्कलिंग। ये क्या वर्ड है? मैम. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HE, G N U ये क्या वर्ड है अफरोज? THE, G S U. द द। अच्छा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड, CAT। ये क्या वर्ड है मैम. अफरोज? हाँ, CAT, इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? जी मैम. हाँ, नहीं आ रहा आज। यू ट्राई वंश, आप ट्राई करो वंश, आपने कोई भी सेंटेंस नहीं रीड किया है, आप ट्राई करो। cat, हम्म वंश हम्म अनम्यूट करो और बोलो। हाँ हाँ, दो CAT क्या होता है? हाँ, यस, हम्म मैं हम्म हम्म ओके, या या ओके, अच्छा, ओके। आप तो स्पेलिंग कर रहे हो ना। मित्तल, यू ट्राई, मित्तल आप ट्राई करो रीड करना। day, हाँ, Sunday, या फिर से ट्राई करो on मित्तल। हाँ, या या W या E U या W या विंडो, 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 विंडो मतलब खिड़की के। double बारी हाँ हाँ, खिड़की, खिड़की, जैसे आप मित्तल खिड़की के पास बैठे हुए हो ना, खिड़की, हाँ। विंडो, खिड़की के पास बैठे हो, खिड़की मतलब विंडो, विंडो। द Window. कैट सैट ऑन द विंडो। अफशा, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? द कैट सैट ऑन द विंडो, इसको हिंदी में क्या, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? खिड़की पर खड़ी है बिल्ली खिड़की पर बैठी है। गुड, वेरी गुड। Aditya, you can go ahead and ask the nouns and the verbs. G. Yeah. So now let's ask first the verb. So there's one verb in this sentence. And remember, verbs are action words. So here. Does anybody know the verb in this sentence? U U B S R U R T R O U W O R B S. Different. So I'm asking about verbs right now. I'm not asking about spelling. So we know that verbs are action words, right? So in this sentence, what's the action? What's happening? So, अच्छा, पूरी क्लास, अफरोज, मित्तल और अफशा and
कौन रह गया? अफरोज, मित्तल, अफशान, वंश। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखो, इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है? क्या काम किया जा रहा है इस वर्ड में? काम कौन सा हो रहा है? क्या काम कर रहे हैं? कैट क्या कर रही है यहाँ पे? बिल्ली क्या कर रही है? कैट दूध पीती है। नहीं, पर इस सेंटेंस में क्या कर रही है? कैट, नाउन, हाँ, इस सेंटेंस में जो है, ये सेंटेंस देखो, नाउन, हाँ, इस सेंटेंस में कैट क्या कर रही है? व्हाट इज द कैट डूइंग? व्हाट इज द कैट? ए, कैट खिड़की पर बैठी है। बैठी है, बैठी है। तो कैट अफशा, दूध पीती है। yes, बैठी है, यस, कैट खिड़की पे बैठी है। तो अफशा, व्हाट इज द वर्ब? एक्शन वर्ड कौन सा है इसमें? बताओ, एक्शन वर्ड कौन सा है इसमें? बैठना, बैठना इज एक्शन, नो? जब आप बैठती हो, बैठी है। हाँ, और बैठी है का इसमें कौन सा लगता है? देखो, पीती है। नहीं, हम्म, दूध पीती है। वो ये तो हमें पता है मित्तल, पर दैट सेंटेंस में दूध पीने के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। कैट सैट ऑन द विंडो, इसमें मिल्क के बारे में कुछ नहीं है इस सेंटेंस में। लिख रहा है। हाँ, तो अक्षा, आप बताओ, The cat इसमें, sat on the window हाँ, पे बारी, the cat बारी पे बैठी है। बारी बैठी है। Cat on window पे बैठी है। बैठी है। तो बैठना होता है एक्शन वर्ड। जब आप बैठते हो तो कोई एक्शन करते हो। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब बैठने है वो है sat. मैम बता हूँ मैम। Aditya, go ahead and circle the word sat. Okay, so the verb in this sentence, right? Let's go over this a little more slowly. So the verb is an action word, right? So let's look at every word in this sentence. Let's start with the. So the, nothing's happening, right? There's no action. So the is not a verb. Cat is actually not an action, right? It's not, your cat isn't like doing something. Well, the cat is doing something, but the word cat, it's just a thing, which is a noun, by the way. So cat isn't it. Let's try sat, okay? So sat is when you sit, right? So we are all sitting. And sitting is actually an action, right? It's something that you're doing. So sitting right here is the verb, right? Here, sitting is a verb. But let's keep looking to see if there's more verbs in the sentence. Let's try on. So on it's not a verb. It's not an action, right? The isn't an action. We already said the wasn't an action here, so we can cross this off. And finally, window. Window is a thing, right? Like Mithil is sitting next to a window. Window isn't an action, it's a thing. It's not a verb. So now we know, if I clear everything, make it a little more clear, sat is the verb in this sentence. It's the only action. So let's now talk about nouns, right? Remember, noun is a person, place, thing, or even animal. So does anybody have any idea what word is a noun in this sentence? And it's not sat, right? Sat is a verb. So out of the rest, which one is a noun? Afsha, do you have an idea? Which verb is a noun? Or which word is a noun? Which word is a person, place, thing, or animal? Mithil, do you have an idea? Mithil, do you have an idea of any nouns?
Yeah, I think I heard cat, the cat, and window. So, yes, cat, cat. Yeah, so cat is a noun, right? Because here, let me write this. Nouns are persons, places, things, or animals. So as we see, the cat is an animal, right? So it's a noun. So now we know cat is a noun. Anything else? Do you see any other word that might be a person, place, thing, or animal? क्लास ट्राई करो अफशा अफरोज मित्तल और वंश एक और वर्ड है जो नाउन है Noun. नाउन विंडो विंडो अफशा यस हाँ विंडो इज अ नाउन विंडो जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आप पढ़ोगे वी कैन मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड लेट अफरोज रीड इट Okay, so Afros, you'll read this next sentence, but let's quickly go over why window is a noun. So window is a noun because it's a thing. So window is a noun because it's a thing. So let's get that right. Cat is a noun because it's an animal. And window is a noun because it's a thing. So let's move on. Let's see. So Afros, can you read this next sentence, number 2? Aditya, you have a simpler sentence. Okay. Here, let's see. Simpler sentence. You want to do number 3? Let's do number 3. Afroz, you try this one. Try number 3. Try the sentence. Ma'am. Try karo. Read karo. ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको नहीं फिर से ट्राई करो आदित्य let's circle the first word Okay. first word Afros, let's go word by word. Let's slow down. एक word करके करो Afroz So let's just look at this first word again. Afros, can you spell this word? Say each letter. इसको स्पेल करो Afroz ये क्या है यू कहाँ दिख रहा है आपको यू तो नहीं है इसमें वेयर इज यू यू नहीं है टी के बाद क्या है टी के बाद क्या लेटर है क्यू नहीं है क्यू कहाँ दिख रहा है आपको क्यू नहीं है टी के बाद क्या है टी उसके बाद क्या लेटर है हाँ ओ कहाँ है टी के बाद कौन सा लेटर है मैम एच एच लेटर है ना एच हाँ एच और एच के बाद क्या है हाँ ओके अब ये जो फर्स्ट वर्ड है जो जिसके ऊपर रेड सर्कल किया है ये क्या वर्ड है इसको इंग्लिश में क्या बोलो बोलो ट्राई करो द
बोलो अफरोज, अब मेरे पीछे बोलो द द THE द मेरी मैम द ओके अब The. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड Aditya. जी हाँ हाँ अब ये करो, ये क्या है? स्पेलिंग बताओ, लेटर्स बताओ और ये वर्ड क्या है, इसको बोलो, ट्राई ये करो. और ये CAR, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? CAR, ये क्या वर्ड है? CAR बोलो. का कार, वेरी गुड, कार. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड Aditya. कार, yes. अब उसके बाद Aditya, you want to circle the next word? या ये ट्राई करो अफरोज, ट्राई करो. हाँ यू हाँ. हम्म और हम्म इन हम्म हम्म हम्म. इस वर्ड को कैसे बोलोगे? ट ट से शुरू होता है, ट. मित्तल, आप ट्राई करना चाहते हो ये वर्ड? कौन ट्राई करना चाहता है बताओ, अफशा या मित्तल? कौन ट्राई करेगा? हाँ. यस. हाँ यस. तो मित्तल इस वर्ड को कैसे बोलेंगे? टर्न, यस. अफशा आपको तो पता है, मुझे पता आपको पता है. अभी मित्तल से पूछने दो. मित्तल इस वर्ड को कैसे बोलेंगे? थिंक. हाँ बताओ. TURNED. ट्राई. नहीं. ओके वंश, यू ट्राई. आपने अभी तक एक वर्ड नहीं बोला वंश. ट्राई करो. TURNED. वंश ट्राई करो. NED. डी. अब इस वर्ड को ट्राई करो, ये क्या वर्ड है? टर्न. टर्न. अच्छा, व्हाट वर्ड इज दिस? बोलो. Turn. Aditya, you can go ahead and say the word. Okay, so this word in red is turned. So I'll just read this sentence because you might not have heard some words. Here, let me get rid of this red circle. Oh, undo. Okay, so the car turned the corner. So what does this mean? So on the street, right, we have a lot of cars. So when you want to turn left or right, the car turns, right? So if the car went left, if the car, let's say some car went left, we say the car turned the corner, right? Because there's a corner and the car went straight and then left. So it turned the corner. So this is a little bit more informal, which means it's more casual. So if we wanted to make this really formal and really proper, we say the car turned left on the car turned left on the street. But that's a little bit longer, right? And we don't speak like that with our friends. So we just say the car turned the corner. So
even if you don't understand what this sentence is saying, you should still be able to pick out the verb and some nouns, right? So we're going to be doing that. Let's start with verb again. So does anybody remember what a verb is? Afsha, do you remember what a verb is? What is a verb? Is it- So You can tell Aditya. This is yeah. hard. So remember, verbs or verb is an action word. Let's try to remember that, guys. So remember, when you hear verb, think of action. So when I say verb, you should immediately think, oh, action. Something is happening. Someone is doing something. Something is doing something. Right? So when I say verb, think about action. So here, I'll delete this. And does anybody know what a verb is? Mithil, do you know what a verb is? What's a verb? Or Afroz or Afsha or Vansh? What's a verb? Remember what I just said? Here, I'll keep this text up this time. So now let me. Yeah, Afroz? Start car. Car. Start. So, well, you might be tempted or you might think it's car, right? But it's actually not. So let's look at car. Now. So we know that this car is moving, right? But the actual, like the word car is just a thing. It's just a car is just a thing, right? If we say the car is driving, well, driving is an action, right? You're doing something, but car is not a verb. So I'm going to cross that out. And here's a little hint. The is never a verb. The is never a verb. So we can always cross out the. So between turned and corner, which one is the verb? Mithil, do you know? Between turned, here I'll underline, and turned and corner. Which one? कोई भी ट्राई करो. वर्ब होता है एक्शन वर्ड. जब कोई चीज कर रहे होते हैं, जब कोई काम हो रहा होता है, वो वर्ब होता है. तो अब इसमें क्या करें? हाँ? D Yes. N Yes. Turned. Turned मतलब मुड़ना. हाँ. Turned मतलब मुड़ना. मुड़ना. मुड़ना होता है एक्शन. Turn. Action. हाँ. Turn मतलब मुड़ना. मतलब मुड़ रही. ठीक है. गाड़ी मुड़ रही है कॉर्नर में. ठीक है. तो turned is the verb. Turned is the verb. Yes, correct. Turned is the verb. Correct. So I think, Rakhi, do we have one more time for one more sentence? Yes, ma'am. We have time for one or two sentences. Okay, one more. Let's try one more sentence. Oh, okay. okay. Here, let's do number 3. So let's ignore 1 and 2. So, let's see. Afsha, can you read this third sentence? we Not we.
is Afsha? They open on Hmm. opens the follow door. Hmm. The door. Mm-hmm. Or Hmm. For? Yeah, that's right. They opened the door for us. So let's do this again. Let's do verbs, just verbs. So remember, verb, action word. Verb, oh, sorry. Verb is an action word. So remember what I said earlier? Always cross out the. It is never a verb. So let's start going word by word. Mithil, is this first word that I circled? Here, let me use a different color. Let's see. Is this first word a verb? They. Is this word a verb? Anybody? Di. Bapani. Ya. Tur. At. Tu. Raja. Jana. Mm-hmm. Mm-hmm. opens corner हाँ बिल्कुल उन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोला दे मतलब वो लोग उन लोगों ने हमारे लिए दरवाजा खोला तो इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है खोलना हुआ ना एक्शन वर्ड कौन सा है खोलना ना दरवाजा खोलना ओपन Yeah. opened is the verb. Okay, go ahead, Aditya, and ask for the noun. Yeah, so now we know opened is the verb, right? So now, do you guys remember what a noun is? Let's see. Noun is a person, place, thing, or animal. So, anybody want to try? Any word that's of a noun? Noun. Try करो. वंश इसमें बताओ noun दिख रहा है आपको? Noun कौन सा word है? noun हाँ. A P and two on Emilian Noun होता है place या thing या person. तो आप बताओ अफशा आपको कोई noun दिख रहा है? आप बताओ अफशा noun. किसने बोला? कोई बोला था? वंश आपने क्या बोला? किसी ने नाउन बताया था अभी मुझे. Somebody said दरवाजा. दरवाजा is noun. खोलना is verb. Door is noun. Door is noun because door is a thing. Yeah. Go ahead and read the sentence one more time so that before we finish. Yeah. So everybody, read this sentence one more time before we finish. आपकी बेटी का कल आ गई मुझे आपकी बेटी का कल आ गई मुझे बेटी का कल आ गया लो Okay, read one shot. Read करो. आप क्या बोल रहे हो? Read करो. Sentence read करो. Vansh. वंश अनम्यूट करिए. Sentence read करो वंश. हाँ read करो. ओपन ओपन मैम हाँ हाँ बोलो वंश ठीक बोलो. बोलो. हाँ
Hmm. He, Hmm. a person, he, Hmm. he, Hmm. prepared, present, Open. Hmm. as, Hmm. ओके कोई और ट्राई करो वंश अभी आपने पढ़ा नहीं ठीक तरह से ये सेंटेंस पर कोई और ट्राई करो somebody else try मित्तल you want to try या अफशा या अफरोज you try Open it. Good. hmm? Madhumita you want to try T-S-E-Y. Door. Open. Door. On. On. Hmm. Use. yes ठीक है I want मित्तल, to that's try, good. ma'am. you try Madhumita मैम सेंटेंस नहीं दिख रहा है मैम. सेंटेंस नहीं दिख रहा आपको नहीं मैम. go to the first आपको नहीं दिख रहा सेंटेंस नहीं मैम. टोटली ब्लैंक इज शोइंग अस. ब्लैंक आपको Yes, कैसे ma'am. ब्लैंक मे बी नेटवर्क इशू हो इस वजह से ब्लैंक शो हो रहा हो क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर है मुझे. हाँ हम लोग को तो सब कुछ दिख रहा है They हाँ. open the door for us. Yes, they opened the door for Door us. for us. Very good. उन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोला. Open means खोला. खोला. Door मतलब दरवाजा. Yes. Now, आज जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन की है वंश वैसे आज आपने कोई भी सेंटेंस रीड किया इसलिए आप प्लीज अब मुझे होमवर्क देना है सारे अफरोज अफशा मित्तल वंश Ma'am. मधुमिता ऑल्सो मुझे 5 सेंटेंसेस लिख के दो सिंपल सेंटेंसेस मुझे साई राम ग्रुप में आप लोग लिख के दो 5 सिंपल सेंटेंसेस छोटे छोटे सेंटेंस मुझे कुछ भी लिख के दो बट सेंटेंस इट मस्ट मेक सेंस ठीक है सेंटेंस का मतलब ठीक होना चाहिए ठीक है तो कितने सेंटेंसेस मैंने मांगे हाउ मेनी सेंटेंसेस 5 ठीक है Sentence. ठीक है तो अब आपको पेपर समझ में आया आपका क्या होमवर्क है. 5 sentences. Okay, ma'am. तो आप सभी अपना होमवर्क कंप्लीट करके ग्रुप में डालेंगे 5 सेंटेंसेस सब लिखेंगे. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ठीक है अब हम सब एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे हैं थैंक यू बोल सकते हैं एक दूसरे को मैम Okay. थैंक यू. Thank you. Thank you Aditya thank you class thank you Rakhi thank you everybody okay Thank you. see you on Friday see you next Friday. Thank you have a good weekend bye Bye. 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 bye Thank you, Afsha. Bye. Bye. Bye, sir. bye Afsu. बाय सर. Bye, sir. Bye, ma'am. बाय सर. बाय पूजा मैडम. बाय मैम.